बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो सेशन हमारा है, दिस सेशन इज इन उर्दू, ये उर्दू में सेशन है और यहाँ पर हम दिस विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में अवेलेबल होगा एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। हाउएवर आज का सेशन बड़ा कंसाइज है, इट्स अ वेरी कंसाइज सेशन जिसमें हम अपनी तमाम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, the first thing to understand is what is the Nafi internship program. So this is about internship program. We will only talk about internship program and nothing else. Okay. Bismillah. In the name of Allah, the merciful, the most merciful. Nafi internship program. Nafi internship program जो है, इसके अंदर आपके पास multiple जो हैं, basically there are multiple streams. सबसे पहला है इंटर्नशिप प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। कौन एलिजिबल है इसके लिए, कौन आके ज्वाइन कर सकता है? जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो इनरोल्ड हैं हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना, यानी कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स या नॉन एक्रेडिटेड एडवांसमेंट ट्रैक मेंशन्ड ऑन अवर वेबसाइट्स आर एलिजिबल। अब अगर वो कोई भी ट्रैक पढ़ रहे हैं या कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो वो इसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। लेगेसी स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी। लेगेसी स्टूडेंट्स जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, चाहे उन्होंने कैट पढ़ा हो, वैट पढ़ा हो, कॉर्ड्स पढ़ा हो, कोई भी बड़ा प्रोग्राम किया हो, रजिस्टर्ड फॉर नॉन एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हुज मेंबरशिप एक्सपायर्ड बिटवीन 2019 एंड 2023 एलिजिबल, क्योंकि जून 2023 से फिर हमारी नया इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तो उससे पहले जो भी हैं वो आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर देम, इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है ना। ये लेगेसी स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 3 महीने कंप्लीटली फ्री है। उसके बाद अगर उनकी इंटर्नशिप एक्टिव होगी तो अगर उनकी मेंबरशिप एक्टिव होगी तो वो इसको ज्वाइन कर सकेंगे। कोई भी, किसी ने भी शॉर्ट कोर्स किया है वो नहीं बैठ सकता। व्हाट इज द रीजन वाई, क्यों? द रीजन इज के यहाँ पर बहुत बड़े लेवल का स्टफ डिस्कस हो रहा है, बहुत बड़े लेवल का काम हो रहा है, और ये वो काम है जो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। अगर आपने कुछ छोटा सा शॉर्ट कोर्स किया हुआ है पाइथन का या डेटा साइंस का या इसका, यू आर नॉट फिट फॉर दैट। यू नीड टू गो थ्रू ऑल द कोर्सेज बिफोर यू कैन ज्वाइन इन द प्रोग्राम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो ये पहली स्लाइड है, सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, यू अंडरस्टैंड कि क्या है इसके। ओके, इंटर्नशिप की ड्यूरेशन। द इंटर्नशिप प्रोग्राम लास्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 months और एज लॉन्ग एज द स्टूडेंट्स मेंबरशिप रिमेन्स एक्टिव। द इंटर्नशिप इज अनपेड। इंटर्नशिप जो है वो अनपेड है, इट्स एन अनपेड इंटर्नशिप। ओके, नाउ मिनिमम 3 months, मैक्सिमम एज लॉन्ग एज आपकी वो एक्टिव है, मेंबरशिप एक्टिव है, आप वहां बैठ सकते हैं, काम सीख सकते हैं, और जो काम होगा मैं आपको उसमें थोड़ी सी ग्लिम्स भी दिखाऊंगा कि क्या काम। ओके, इंटर्नशिप का फॉर्मेट। द इंटर्नशिप इज कंडक्टेड वर्चुअली एंड रिमोटली। इट्स ऑल वर्चुअली, दिस इज ऑल वर्चुअली, पूरी वर्चुअल उसके ऊपर है। आप जूम के जरिए पोर्टल में लॉग इन करेंगे, जूम के जरिए वहां से जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू लॉग इन। देयर इज जूम डोमेन ऑथेंटिकेशन कमिंग अप, वी माइट यूज जूम डोमेन ऑथेंटिकेशन। हम हो सकता है उसको यूज करें या फिर कोई और चीज यूज करें, बट यू विल नो, वट एवर वी यूज यू विल नो। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन, इसमें लिए आपको विजिट्स अलनाफे कैरियर पेज, आप वहां जाएं एंड एक्सेस द इंटर्नशिप सेक्शन टू अप्लाई। आप उसमें जाएं, alnafi.com/career में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन गो देयर, यू कैन अप्लाई। वेरिफिकेशन होगी आपकी स्टेटस की, जो जिसमें टेक टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अप टू अ वीक। वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द बैक एंड। और जो कैंडिडेट्स होंगे उनको बुला दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स का हो सकता है इंटरव्यू किया जाए, डिपेंडिंग के व्हाट द केस इज, राइट। से इट्स ऑन अ केस बाय केस बेसिस, बट यू विल बी ब्रॉट इन, ठीक है। इफ यू आर एन एक्टिव स्टूडेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, you have completed all the courses on time, etc etc, आपको अंदर ले आ जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है इट डजंट मैटर। अगर आप अभी एडमिशन लिया है और अभी जाके करना है, बिल्कुल कर लो। आई मीन, बिकॉज द मोमेंट यू ज्वाइन द इंटर्नशिप प्रोग्राम, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आपके सीवी पे लिखा होगा कि यू हैव डन दिस 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 दिस, और वो जो सब काम करवाया जा रहा है वो आप सब उसके अंदर लिख कर उसको करेंगे। सो इट इज हाईली एडवाइजेबल फॉर एवरीवन। ये हम बताते चल रहे हैं सबको कि सब ने आकर इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज अ लॉट। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, देयर इज एन ओरिएंटेशन प्रोसेस। आपको ओरिएंटेशन प्रोसेस दिया जाएगा, आपको ईमेल आएगी, ईमेल में सारा पैक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जॉब ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू अंडरस्टैंड द कंपनी, पीपल्स
processes and technologies and this specific role. Company की जो हमारी organization है उसमें people कौन है, processes क्या हैं, technologies क्या हैं, उनकी क्या specific role है, you have to go through all of them, all of those things. There is a psychometric assessment. आपको psychometric assessments भी पास करनी होंगी, ये वक्तन फवक्तन आपके पास आएंगी. There is emotional intelligence course. आपने एक emotional intelligence का course भी करना है. This is very very important. ताकि आप दुनिया की किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट अपनी इंटेलिजेंस अगर शो करनी है कि यू कैन मैनेज ऑल ऑफ दीज इश्यूज विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप वो भी दिखा सकें. ठीक है, उसकी भी असेसमेंट होगी. ठीक है, दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट. इंटर्नशिप यू हैव टू, देयर विल बी अ स्टार्ट डेट. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटर्न मेंशन होगी. देयर विल बी अ स्टार्ट डेट, देयर इज नो एंड डेट. यू कैन स्टार्ट बट द एंडिंग विल बी डिटरमिन्ड as per your track and as per your eligibility, like your आपका कोर्स का एक्सेस लाइव है कि नहीं. जो लेगेसी स्टूडेंट्स हैं वो 3 महीने तक बैठ सकते हैं. उसके बाद अगर उनको बैठना है तो उनको किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में, एडवांसमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लेकर आना पड़ेगा आगे काम सीखने के लिए, ताकि वो पढ़ते भी रहें और काम भी करते हैं. और जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जब तक उनकी वो एक्टिव है, मेंबरशिप एक्टिव है, वो वहां बैठकर काम सीख सकते हैं और कर सकते हैं. ओके, 4 hours per day, 24 hours per week, ये minimum requirement है. You can also clock in at any time of the day as per your discretion. आप किसी भी मर्जी से किसी भी टाइम पे लॉक इन करके आप काम कर सकते हैं. जो भी इंटर्नशिप की क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड होकर डाल दी जाएंगी. You can go and follow them. You can go and follow them, ताकि आपको अंदाजा हो कि what is happening. Okay, आपको सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा. There is a non-disclosure agreement to be signed. If anyone is caught violating this clause, that person will immediately be fired from the company. ठीक है ना, उसकी फीस सारी जाया हो जाएगी. They will lose their fee. They will lose all the things. ठीक है ना, they will lose privilege to sit and work in the company. They cannot disclose whatever they're learning within the company. They cannot. Simply they cannot. Okay? They cannot disclose. अगर उन्होंने कोई चीज disclose की, like policies, procedures, basically like this is like any other company. आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, आपके साथ यही होगा. You have to follow the controls, and if you do not follow the controls, you will lose basically your role. And आपकी सारी फीस जाया हो गई. आपने एक अगर पूरे साल की फीस जमा की है और and you are caught disclosing information, then this will create problems for yourself. Again, you'll be creating problems for yourself. Keep this in mind. Non-disclosure agreement needs to be signed. So be careful. With your attitude, be careful with your basically behavior with other employees of the company, and be careful with all of these things. There is a process. एक पूरा process है जो HR का process है, जिसमें सब लोग बैठेंगे, उससे गुजरेंगे. You can अगर आपने किसी की शिकायत लगानी, you can do that. You will follow through all the things, so you will know, right? जब आप policies and procedures को देखेंगे, all of those policies and procedures are applicable on you. ये सब आपके ऊपर applicable है. You have to be extremely careful. ओके, आपको बहुत एक्सट्रीमली केयरफुली होकर इसके ऊपर काम करना है. नेक्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कंप्लीट असाइन्ड टास्क्स. आपको जो टास्क दिया जाएगा आपने वो कंप्लीट करना है. अटेंड मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग सेशंस. आपने तमाम मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करना है. एंड यू मस्ट अडेयर टू कंपनी पॉलिसीज इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड वर्कप्लेस बिहेवियर इज रिक्वायर्ड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपने कंपनी में पॉलिसीज को कंप्लाई करना है. If you see anything, you have to mention that to the HR. There is a portal in HR. आपको portal मिलेगा. आप उसमें जाके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे. You can create your profile. You can create all of those things. और आपको सब चीजें दी जाएंगी. And then अगर आपने HR को राब्ता करना है, you can do that as well. There is a whole process, and there is a whole CRM, ERP, Enterprise Resource Planning application. You will get access to that. Today is basically for June 14th, 2023, right? So the new ERP implementation is going through some testing. We did the testing. Now it is being rolled out right now in production. तो उसको production में roll out किया जा रहा है. वो जो enterprise resource planning का जो software है, उसका access आपको in the next 1 month मिल जाएगा. You will have access to that. So आप अपना पूरा profile बनाएंगे, सब कुछ करेंगे वहाँ पर. You will be able to create all the profiles and everything, and then you will be able to go in and work. So you have to comply with the policies and procedures of the company. This is very, very important. Okay. Next is evaluation and feedback. इस पूरे internship में task completion, attendance and contribution, we will be monitoring it. We have the capability to monitor all of these things.
हम आपसे रेगुलर फीडबैक भी लेंगे, हम आपसे इवैल्यूएशन भी आपका करेंगे. देयर इज अ होल कस्टमर डिलाइट टीम. कस्टमर डिलाइट टीम, देयर इज अ कंप्लीट कस्टमर डिलाइट टीम. कस्टमर डिलाइट टीम का काम क्या है कि उसमें कस्टमर सक्सेस है, उसमें ईआरपी के लोग हैं जो ईआरपी को पूरा मैनेज करते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का. ये तमाम लोग उसको मैनेज करते हुए आ रहे हैं. एंड कस्टमर सक्सेस को वो इवेल्युएट कर रहे होंगे, एकेडमिक एंड इंटर्नशिप गवर्नेंस को वो लोग इवेल्युएट कर रहे होंगे. दे विल बी कॉन्टैक्टिंग यू, आस्किंग फॉर कंप्लीटिंग बेसिकली कंटिन्यूस फीडबैक होगा. आपको ना क्वेश्चनर्स को भरना होगा. 5 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 5 स्मॉल क्वेश्चन, short questions where you have to say yes or no, and you can write something if you want to say something, right? But that thing needs to be done. ये आपको करना पड़ेगा. This is extremely important for you. Intellectual property rights. Participants are required to sign a document. Everyone needs to sign the NDA. Documents ensures the assignments of intellectual property rights to the company. Pertains to work produced during the program. Whatever we are doing, whatever is being done by you, is basically the property of the company. So आप कोई भी चीज डिजाइन करते हैं that we have given it to you, it's property of ours, right? So that's one thing, because this is an internship program. You will be going through lots and lots of designs and practices and things, so you have to comply with all of those rules and regulations. Okay. इसके बाद next जो चीज है वो है internship benefits. Internship के benefits क्या है? Now, before I go in this one, there is no company in the world. आज मुझे just today I got the news. हमारा बच्चा एक लॉयडस में एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है. He got a job at $130,000 per annum. There's another student who passed his interview at Drax, which is a SCADA, which is basically one of the biggest bio fuel generator in UK. There's another student जिसकी नोकिया में जॉब हो गई कनाडा में. There's another student जो बेल के अंदर घुस गया है. He went into Bell, माशाल्लाह. Bell जो बहुत बड़ी टेलको कंपनी है. So today, just today, we got the news of 4 students securing jobs. Why? How? They have been working in the internship program at the back end. These were the early ones जिन्होंने 2 महीने 3 महीने काम किया, just 2 or 3 months, and they were able to get their resumes finalized and everything finalized, and they were able to go in. So यहाँ पर आपको practical experience दिखाया जा रहा है. You are going through hands-on projects. This cannot get, you can't get your hands dirtier than anything else. This is practical experience, hands-on projects. There's an ERP, there's an ITIL solution, there is a HR. The complete जो company है उसमें आपको काम करवाया जा रहा है. This is real world exposure in emerging technologies. And when I say emerging technologies, I'm going to show you one thing. The first project, I'm going to show you the first project, because there are so many projects that we'll be doing. Opportunity for future employment at a Nafi based on performance. If your performance is good, you will be given an opportunity to work with us, either wherever we are, like in Canada or in UK or whatever the case is, right? Work experience letter and potential employment opportunities domestically and internationally. Is basis के ऊपर students are able to secure jobs, remote jobs, on-site jobs, basically jobs in different companies, in Fortune 500 companies, so on and so forth. However, ये सब कर सकते हैं, लेकिन Al-Razaq program जो है, Al-Razaq is one of the names of Allah, which means the one who provide you sustenance, right? इसके अंदर, this is only for those के जो हमारे exams को pass करेंगे. Whoever passes our EduCall exam, whoever passes the EduCall exam, like complete all the questions and answers and everything in the interview and the presentation, we will recommend these people as potential employees or contractors or working full-time, part-time, on-site or remote in these companies around the world. Okay, na? We will be able to process their work permits and all of those things. But you have to pass the EduCall exam. It's not easy, but you have to go through it. I mean, it's not that difficult. The easier, when I say it's not easy, that means they have to go through 300 plus MCQs question banks, or each question bank and there are almost 35 to 30 question banks. So we're talking about a huge number. You also have to pass along the way some specific exams, right? But the EduCall exam consists of MCQs.
there's a huge bank, then usme you can keep on trying until you score that. And once you score, we say, okay, you have passed that. Aapne pass kar liya. So everyone can pass it, but they have to keep on trying. The second जो चीज़ है उसके अंदर वो है आपको एक पूरा एक नेटवर्क डायग्राम दिया जाएगा. You'll be given a scenario जिसका आप पूरा डिजाइन करेंगे, and then you have to present that and you have to defend that. So you have to do all of those things. It's not easy. You have to work hard. You have to complete all the courses. But if you do that, then we can put you forward in front of these companies. फिर हम आपको रख सकते हैं. Then we can say with confidence कि यार दूसरा तो internship करके आया है, मगर ये हमारा prize employee है because इसने सारा काम किया है. And he has been able to pass all the things as well. Right? This is very important. This is for those who basically complete our EduCall exam. Otherwise, but it is not necessary. Internship mein, you can pass 25% of the exams and you can still go, but you can still get your resume, aapko mil jayega, aapko internship letter mil jayega. Lekin agar Ar-Razak program aapko chahiye, you have to work hard. Internship completion certification for skill validation. We will give you that as well. Once you complete everything, all the things are done. What things needs to be done, kaise karna, kya karna hai, you will know about that in the portal in the next 1 week or so. Internship program structure. There's interview preparation, on the job training, more interview preparation. There is resume writing. On the job training involves assigned tasks and projects. So we will, इसके अंदर हम आपको बार-बार emphasize करेंगे multiple चीजों के ऊपर. The whole program of internship is designed to ensure कि आप वहां जाकर काम कर सकें, job secure कर सकें. That is the singular purpose. There is nothing else. Whatever we are teaching, our goal is we are teaching you the job description from day one. So हमारा goal क्या है? You get the job. And once you get the job, हम अगले first 30, 60, 90 days में आपकी मदद करेंगे. We will assist you कि आप वहाँ job पे बैठे रहें. You are able to hold that, right? That is the goal. There is nothing else. This is a singular goal. Training pathways. Start with a level 3 diploma as a foundational training prerequisites. तमाम internship के जो काम होगा, I will give it to you in level 3 diploma programs, right? वहाँ पर आपको मिलेगा. But अगर वहाँ पर कोई diploma in DevOps का बैठा हुआ है, तो he will sit in the cloud cybersecurity की जो live class उसमें बैठेगा. He will attend that, and then over there मैं सबको काम दूंगा कि ये level 3 का काम है, ये level 4 का काम है, 5 का काम है, 6 का काम है, 7 का काम है, 8 का काम है. I mean 8 नहीं है, we don't have 8, we have 7, but all of these works are here. जिसमें DevOps का काम अलग है, SysOps का काम अलग है, cyber security का काम अलग है, offensive security का काम अलग है. I mean all of these things are separate. Offensive security is separate, SCADA, IoT, big data, AI, all of these things. But जो चीज पढ़ रहा है, if someone is doing level 4, तो वो level 3, 4 दोनों के access उसको मिलेगा. Like for example, अगर कोई level 4 DevOps कर रहा है, तो वो DevOps के level 3 में बैठेगा, level 3 में बैठेगा, और DevOps के level 4 में बैठेगा. तो वो दोनों काम करेगा. He will be able to do both the work. So यहाँ पर जब काम मिल रहा होगा, when I'm handing over the work, they will be able to see, and when the work is being done in level 4, they will be able to go there and see कि वो काम कैसे हुआ. I mean, how was this done? कैसे किया? If someone is doing DevOps and SysOps both, so he will sit with me in level 3, where the work is being handed over, जहाँ मैं उसको काम दूंगा, फिर वो level 4 वाला काम भी देखेगा, DevOps का, level 4 वाला, 5 वाला काम भी देखेगा, SysOps का, दोनों को मिलाकर वो level 5 में सारा काम देख सकेगा. If someone is doing DevOps, SysOps, AI, which is known as AI Ops, तो वो सारे काम देख रहा हो. If someone is doing DevOps, SysOps, DevOps and offensive security, they'll be able to see this. So everyone will be given their respective tasks. So when you log in the portal, जब आप portal में log in करेंगे, you'll be able to see कि आपको कौन सी चीज कहाँ नजर आ रही है. And you have to go in, and we will send you the email. आज class है, इस time पर है, or the trainer has completed their project, and the video is there. आप video जाके वहाँ देख सकते हैं. All of these things are there. So you'll be able to go in and see, okay, यार मुझे समझ आ गया, ठीक है, ये सब सही है. I'll be able to see all of those things. So अगर कोई level 3 कर रहा है, तो उसको सिर्फ level 3 के काम नजर आएंगे. सबको जो काम मिल रहे हैं, he can see that as well. He or she can see that as well. But वो level 4 के अंदर जाके दूसरे काम नहीं देख सकता. वो level 4 वाला level 3 and 4 दोनों देख सकता है. Level 5 वाला level 3, 4 के सारे देख सकता है, and 5 के भी देख सकता है, depending on what is he studying. Because as I said, level 7, for example, if someone is doing smart ops, then
दैट पर्सन वो जो है लेवल 3 में सारा काम देखेगा, देन वो डेवऑप्स का काम भी सारा देख सकता है, कर सकता है, सिसऑप्स का भी कर सकता है, बिग डेटा का भी कर सकता है, एआई का भी कर सकता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का भी कर सकता है. दैट्स द 5 थिंग्स. सिमिलरली ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जगह ब्लॉकचेन डाल दिया, राइट? सो व्हाटएवर द केस इज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क, बट यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल द वर्क. ठीक है, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल द वर्क कि ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, हाउ कैन यू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एंड दीज आर रियल प्रोजेक्ट्स. There will be thousands and thousands of dollars will be spent on building this network, and you will see. आपको नजर आएगा. I'm going to show you a glimpse, but tomorrow we will go through all the things in detail. Internship project prerequisites. Every thing will have a prerequisite. Now, what this means is कि अगर किसी ने diploma in cloud cybersecurity पढ़ा हुआ है, it will be easier for them to go through this thing. नहीं पढ़ा हुआ है, it's fine. They can still go through it. They can still sit there, watch what is happening. But when they go back, जब वो वापस आए पढ़ने के लिए, तो जब पढ़ रहे हो, they can correlate. अच्छा यार मैंने ये पढ़ा था, अच्छा ये ऐसे पढ़ा था. Okay, now I understand. So now not only you are studying the same thing because we're teaching you the job description, but now you're seeing that in action as well. Okay, now I understand. कि इसका काम कैसे होता है. Now I completely understand all of these things. So this is very important. ठीक है ना? So there is no prerequisites for joining the internship, but when that specific part is being done, that specific part has a prerequisite. Now everything will have a prerequisite of what? Everything will have a prerequisite of Python, Bash, some of the things. Every track, if you want to be successful, अगर तुम लोगों को कामयाब होना है किसी भी दुनिया में, बिग डेटा हो, AI हो, तुम्हें दुनिया में किसी भी जगह जाना है, ब्लॉकचेन में कामयाब होना है, स्काडा में, IoT में, whatever, ठीक है ना, data science is all gone, it's all in big data now. सही, ठीक है, whatever you want to do, cyber defense हो गया, offensive security, GRC, you need to do 3 things. That is the first track going towards it, and that is basically in the middle of your palm. ठीक है, imagine this as diploma in cloud cybersecurity, and then one finger, you know, इसके ऊपर लिखो. If I have to write it down, ठीक है ना, so there is level 3, and then there is level 4 DevOps. I'm trying to write it down on my finger, right? I don't know if you can see it or not, but in the middle of the finger, in the middle of the palm, imagine कि ये आपका level 3 diploma है. DevOps, diploma in DevOps, diploma in SysOps and cloud, diploma in AI. If you combine all of them, 3 together, you 1, 2, 3, or you 4, मिला दें आप इसको, this becomes basically your AI ops. This is the most important thing. Now, अगर तुम सिर्फ DevOps cloud पढ़ रहे हो, diploma in cloud cybersecurity, you can work as a system admin, as a SOC engineer, as a GRC guy. Yes, you can work. But अगर तुम्हें और ज़्यादा jobs अच्छी चाहिए, high paying jobs चाहिए, ठीक है ना? So you have to do these 3 things. Now, it all depends on your flexibility. Whatever तुम्हारी जो भी इस्तिताअत है, उसके हिसाब से तुम उसको लेके चलो. You don't have to follow everything. You can't do that. ठीक है ना? You do follow as per your financial means. ठीक है ना? As per your time. Time is the most important thing. Financial mean everyone can arrange finances. But अगर time नहीं है, then don't do it. If you have 3 hours a day, you can do AI ops, which means artificial intelligence, DevOps, SysOps, and diploma in cloud cybersecurity. You're learning all of them. So it all depends. ठीक है? But if you have 2 hours, go for DevOps, SysOps. ठीक है ना, डिप्लोमा इन डेवऑप्स एंड सिस्टम. दिस इज आरकेएफ लेवल 5. ठीक है ना, इन सब के अलग अलग लेवल्स हैं. वी विल शो यू द लेवल्स, एवरीथिंग विल बी इन द पोर्टल. तुम लोग देख सकोगे, कर सकोगे. ओके, इसके बाद है लर्नर्स एनरोल्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम कैन ओनली पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स एसोसिएटेड विद दैट डिप्लोमा ट्रैक. नाउ व्हाट दिस मींस इज सारा जो काम है वो लेवल 3 डिप्लोमा में आपको मिलेगा. दैट इज व्हाई आई से इट इज द बेस. लेवल 3 इज द मेन बेस. So level 3 में तुम्हें सारा काम मिलेगा. So everyone needs to sit down in level 3. But then whoever is doing level 4 will do level 3 in level 4. Who is doing level 5, level 3, 4, 5. Depending on क्या track पढ़ रहा है. DevOps, SysOps, AI, DevOps, SysOps, AI. तो वो सब जगह काम करेगा. So वो उसको देख सकता है. Now अगर कोई सिर्फ level 3 पढ़ रहा है, तो वो level 3 में देख लेगा क्या DevOps में उसको ये काम मिला है, ये काम मिला है, ये काम मिला है. यार मुझे नहीं मालूम what is this, but I can see कि ये काम मिला है. ठीक है ना? I wish I could do this. ठीक है ना, विश कर सकते हैं आप. यू कैन विश.
ठीक है, but that requires a certain knowledge and a certain courses to be completed. So if you want to go there, you have to work hard. ठीक है ना, अपने आप को अरेंज करो, फाइनेंसेस अरेंज करो, टाइम अरेंज करो, एंड देन गो देयर इंशाल्लाह. इसके बाद है ऑनगोइंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज. मेंटोरशिप थ्रू एंड थ्रू आपको मिलेगी. ठीक है ना, आपकी कस्टमर्स जो सक्सेस वाला जो असिस्टेंट जो आपका मैनेजर है, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है दुनिया में. आपके माँ बाप के बाद अगर कोई और अच्छा दोस्त आपको मिलेगा तो वो कस्टमर सक्सेस मैनेजर मिलेगा, बिकॉज उसका एक सिंगुलर पर्पस है, टू इंश्योर कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, आपकी जॉब हो जाए. यहाँ पर अगर किसी को पढ़ने के लिए आना है, इफ समवन इज हियर जस्ट टू एंटरटेन देमसेल्व्स, दिस इज नॉट एन एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म. यहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ भी नहीं. यहाँ जब सब काम करवाया जा रहा है. यू डू योर वर्क एंड यू प्रोसीड. वी आर नॉट हियर टू, आपको यहाँ पर हम कुछ नहीं कराने के लिए आए, सिर्फ काम करवाना है. इफ यू वांट टू वर्क इन द इंडस्ट्री, रिमोटली काम करना है, ऑन साइट काम करना है, दिस इज द प्लेस फॉर यू. देयर इज नथिंग एल्स. ओके, और हमारा कोई मकसद नहीं है. लर्निंग मटेरियल्स आपको सारे दिए जाएंगे. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी बिकॉज ऑफ आईसाका एंड एवरीथिंग. यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद एवरीवन इन द वर्ल्ड. फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, confidentiality and code of conduct, all of these things needs to be complied. Termination of internship, as I said, we reserve the right to terminate the internship of any student who fails to comply with the program's terms and conditions. If we see you, ठीक है ना, breach किया, confidentiality किया, engages in unethical conduct or fails to meet the performance expectations, आपको ban कर दिया जाएगा from the platform for at least 3 to 6 months. It depends on the discretion. It's on the discretion of the senior management. ठीक है ना, we reserve the right. If we see you in any unethical behavior, we will do that. ठीक है, so please take this, ठीक है ना, as a privilege, not as a right. This is a privilege. ठीक है ना, if we see you abusing that privilege, it will be taken away. ठीक है, know this. This is very important. So this is our diploma. Teach you the job descriptions from day one. That is our focus. अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए, you can go to alnafi.com. For any queries or contact, alnafi.com/support. You can go on our website and you can even open, basically, आप ticket खोल के बात कर सकते हैं, whatever you want. There's a WhatsApp chat button there. There's all of those informations are there. आपके पास सारी चीजें हैं. ठीक है, this was just a preview of all the things. शुरू के 1 month तक हम इसको खुला रखेंगे, so that जब तक आपको सब चीजें आ रही हैं, you're coming in and you're getting acclimatized with all the things, जब तक आप इन सब चीजों से मानूस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, उस वक्त तक आपको सारी इंटर्नशिप की जो क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस हैं, वो आपको वहाँ नजर आएंगी लाइव होते हुए, आप देख सकेंगे. अगर किसी को देखना है कि मैं सबसे पहली चीज क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आई कैन शो यू जो पहला आर्किटेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ. ये पहला आर्किटेक्चर पूरा PCI-DSS का एक पूरा नेटवर्क बनाना है माइक्रो सर्विसेज के ऊपर. ठीक है, और इसके ऊपर हमने पूरा खड़ा किया है नेटवर्क आपके लिए, जो आपके सामने खड़ा होगा. तो पूरे की पूरी जो चीजें हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे बनती हैं, कैसे काम होता है, माइक्रो सर्विसेज कैसे खड़े होंगे, दिस इज द डायग्राम जिस पे आप काम करेंगे. सो एसेंशियली आपको पूरा का पूरा काम उसके ऊपर करना आ जाएगा. यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू मेक दिस होल नेटवर्क फ्रॉम ग्राउंड अप. तो मैं सारा कन्फिगर करना, आर्किटेक्ट करना, डिजाइन करना, सब आ सकता है अगर तुम AI ऑप्स पढ़ रहे हो. क्योंकि इसके अंदर ये AI ऑप्स का पहला हुआ है. अगर तुम लेवल 3 पढ़ रहे हो, यू विल बी एबल टू नो ऑल ऑफ दिस. ठीक है ना, बट एट अ हाई लेवल. बट गार्ड ड्यूटी पे तुम्हें काम आ जाएगा, कुछ इसके ऊपर काम आ जाएगा, इनके अंदर एप्लीकेशन कंटेनर्स में थोड़ा बहुत क्या काम हो रहा है, यू विल बी एबल टू लर्न ऑल ऑफ दीस थिंग्स. ठीक है ना, डिपेंडिंग आपको एज अ सॉक एनालिस्ट की तरह काम आ जाएगा. क्लाउड वॉचेस को आप देख सकोगे. ठीक है ना, दूसरी कुछ और चीजें आप देख सकोगे. बट इफ यू डूइंग DevOps and SysOps, you will be building all of these things. If you're doing AI ops, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कर रहे हो, you will be automating all of these things. अगर आप ब्लॉकचेन कर रहे हो, तो इसके साथ यहाँ ब्लॉकचेन की भी चीजें हैं. There's the quantum ledger to secure the data. All of these things. ये बहुत बड़ा नेटवर्क है. This is a huge thing. This is not easy. ठीक है, so you'll be going through all of those things. And वो तमाम solutions जो आपको नजर आ रही है, config, WAF, CloudTrail, all, we will be using all of these things. So अगर तुम किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, and you are being interviewed, कि we are a PCI-DSS payment service provider and we do this, you know, what do you think about this? What do you think about that? How do you configure this? How do you configure that? आप पूरा उसको explain कर सकोगे with confidence and with examples, कि
मैंने पूरा नेटवर्क ऐसा बनाया, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कोड का टेम्पलेट खड़ा किया, मैंने सारी सर्विसेज को सेलेक्ट किया, कंसल्टिंग टीम से बात की, उनके सारे एप्लीकेट पीपल्स को आइडेंटिफाई किया, प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई किया, टेक्नोलॉजीज के कौन कौन से कंपोनेंट्स वो किया, कौन कौन सी सर्विसेज हम लगाएंगे, एसएनएस, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, सबको हमने सेलेक्ट किया, क्यूबरनेटीज, ईकेएस के ऊपर एप्लीकेशंस के कंटेनर्स हमने बनाए, उनको खड़ा किया, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तमाम सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर इन्फ्यूज किया, AWS बेडरॉक हो गई, ओपन एआई हो गई, वी गोइंग टू यूज ऑल ऑफ देम, ठीक है, उसको हम कर रहे होंगे। तो ये सब मैंने काम किया, इसको ऑटोमेट किया, कंप्लायंस किया, आर्किटेक्ट किया, डिजाइन किया, डिप्लॉय, वो बोलेंगे दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो इफ दे आस्क यू तुमने सॉक में कैसे काम किया, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। इफ आई आस्क यू कि पॉलिसी कैसे बनाई, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। इफ दे आस्क यू कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। दैट इज योर इंटरव्यू, एंड नो वन, एंड आई मीन नो वन इज डूइंग दैट। दिस इज हाउ यू गो इन एंड यू सिक्योर द जॉब्स। सो ये पहला जो नेटवर्क है, this enables you to work at any financial institute, retail service provider, retail merchants, anywhere in the world. दुनिया में इंडस्ट्रीज जो है ना वो डिवाइड हुई है, इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। तो सर्विस इकोनॉमी सबसे बड़ा सेक्टर। अगर आप चैट जीपीटी से पूछो, ठीक है, इफ यू गो आउट एंड आस्क चैट जीपीटी विच सेक्टर इज द बिगेस्ट सेक्टर इन द वर्ल्ड, कौन सा सेक्टर है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, ठीक है ना, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा है, लेट्स गो एंड सी। Again, let's go and ask ChatGPT, okay, which sector is the biggest sector in the world, right? Please define all the global economy sectors which makes $100 trillion GDP by name. Okay, so I just typed a question, ठीक है ना। तो दुनिया की जो इकोनॉमी है वो $100 trillion की है, ठीक है ना। सो आई जस्ट टाइप इन अ क्वेश्चन कि भाई प्लीज डिफाइन ऑल द ग्लोबल इकोनॉमी सेक्टर्स, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, disregard that, which makes $100 trillion GDP by name. So प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शरी सेक्टर, आई मीन ये सारे सेक्टर्स हैं। प्राइम सेक्टर में क्या है, एनर्जी, मटीरियल्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, healthcare, financials, information technology, telecommunication, utilities, real estate, ये दुनिया के तमाम सेक्टर्स है, ठीक है ना। और ये सारी चीजों के ऊपर हम काम करवा रहे हैं, एंड वी आर हैंडलिंग बेसिकली द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड द कंज्यूमर स्टेपल्स एंड द फाइनेंशियल्स। ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स में पेमेंट्स होती हैं, इन तमाम जगहों पे पेमेंट्स होती हैं। फाइनेंशियल सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, एंड वी हैव पिक्ड अप द बिगेस्ट सेक्टर। सो अगर तुम कहीं जाते हो, if you go for an interview, you can work as a platform engineer, as a DevOps engineer, as a SysOps engineer, as an AI ops engineer, as a SOC analyst, as a GRC, whatever they say, तुम्हें आता है, बोलो yes मुझे आता है, and you can explain it to them, and you can build it for them, and you can stand it, make it stand in front of them as well. This is what you are learning. No one, and I mean no one is teaching. देखो हमने पूरा जो एजुकेशन है उसका पैराडाइम शिफ्ट चेंज कर लिया। This project is 6 months long. In 6 months तुम एक एक चीज को देखोगे, ठीक है, एक एक चीज को तुम चेक करोगे। एक 6 months के अंदर तुम्हारे सामने प्रोजेक्ट चलेगा, प्रोजेक्ट आएगा, there will be challenges, there will be resource issues, there will be financial, इसके ऊपर बिल बनेगा इसका, you'll be able to see everything. You'll be able to see everything. Pen testing होगी, endpoint security, app security, OS user access, patching, log storage, data storage, hypervisor, core networking, all of these things. तुम्हें नजर आएगी, तुम्हें ये नजर आएगा कि मॉडल क्या है। अभी किसी को समझ भी नहीं आ रहा कि कस्टमर और AWS क्या कौन है, ठीक है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड अप दीज थिंग्स। दिस इज व्हाट यू विल बी एबल टू बिल्ड अप, कि हर लेवल के ऊपर यू विल हैव इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ठीक है। सो आपका पूरा नेटवर्क उस पर चल रहा होगा, एंड दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस होल थिंग इज वी आर मेकिंग दिस थिंग द बेस्ट थिंग पॉसिबल, वेयर यू कैन नॉट लर्न दिस थिंग। और ये सारा जॉब्स जो है ना, 100 मिलियन जो जॉब्स सालाना क्रिएट हो रही है, 1 बिलियन लोगों को रीस्किल करना है, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक, दिस इज व्हाट वी डूइंग, वी आर रीस्किलिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेवल इकोनॉमी। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आज का यही सेशन था हमारा। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। दिस विल बी रिकॉर्डेड एंड केप्ट ऑनलाइन, आपको वहां पर मिलेगा। इट विल बी डब्ड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस एज वेल एंड विल बी अवेलेबल एज वेल इंशाल्लाह। सो गो, जाएं, रजिस्टर हो,
you will be approached. आपको approach कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है. So don't worry about it. But you will be reached out by our support staff. In एक हफ्ते से 2 हफ्ते लग सकते हैं. It can take from 1 week to 2 weeks to get you into the internship program because we have to validate many things. We are automating those things on the back end as well. So उस पे बहुत सारा काम हो रहा है. ठीक है. So be patient. But you'll be able to join in and you'll be able to attend all of these things. Your customer success manager is your best friend. As I told you guys, जैसे मैंने आपको बताया, customer success manager आपको सब चीज़ों के बारे में बताएगा, गाइड करेगा. आप सपोर्ट टिकट के साथ खोल सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेगा. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको असिस्ट करे, बताए सब कुछ और समझाए कि कौन सी चीज़ कहाँ किधर कैसे मिलनी है. लेकिन उसको करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन आपको गाइड कर सकता है. यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ पर देख लो, देखो ये सामने तुम्हारी चीज़ रखी है, इट्स देयर, कैन यू सी इट? That is what you're looking for. So this is what you can see. Okay, this is what you can touch. So go, apni tayari kare inshallah, because as I said, a billion jobs are available, but these jobs are available. There are no shortcuts. I can tell you right now, there are no shortcuts. Koi shortcut nahi hai. All the pathway goes through hard work. So tumhe mehnat karte upar jana. And if you don't work hard, there's nothing for you. Koi bole na shortcut, ye kar lo, do this, and you will be able to secure the job. They're lying to you immediately. I'm telling you right now. This is real work. This is as real as it can get. ठीक है ना? You know, I do fishing. मैं अपने बच्चे का fishing करता हूँ. So we do salmon fishing. हम salmon fishing करते हैं. So when I did the salmon fishing, मैंने अपने बच्चे को बोला कि देखो, you are killing the fish. I mean, you're catching it, killing it basically. ठीक है ना? And then you're cooking it, eating it. This is as fresh as it can get. This is as fresh as it can get. When it comes to your work experience, what you're learning is like eating salmon fish. Now, some of you may not like salmon fish. तुम लोगों में से किसी को salmon fish शायद पसंद नहीं होगी, but that's the most expensive fish in the world when it comes to heart. और सबसे best fish, सबसे healthiest fish है. Not the expensive, but the healthiest fish. So eat this, and inshallah, you'll be able to secure the jobs in a record amount of time, inshallah. Okay, Jazakallah khair. I will see you tomorrow in our live session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.